Hello everyone, welcome back to my channel, Dr. Pooja K, and this is Pooja. I'm a physiotherapist, and in today's video, we're gonna talk about some medical myths which I heard, and obviously, like people also in general, like they listen, right? I mean, like in general population, जब हम बात करते हैं किसी से भी, like काफी common चीज है, right? Getting a medical advice from non-professional, they are not certified or anyone like that. Okay, and I believe like some of it true है, सच भी होते हैं कुछ चीजें, but like before like I'll give you some 10 pointers जिसमें मैं बात करूंगी कि क्या क्या मेडिकल मिथ्स होते हैं जो हम जनरली अपने फ्रेंड्स फैमिली से सुनते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के एडवाइस लेते हैं या इंटरनेट से एडवाइस लेते हैं, राइट? Well, YouTube is also internet, but then you should listen to someone who is certified or maybe experienced in that particular field, so that they know the scientific reason behind advising you, right? For example, even my father advised a lot of things, or being it generational pass on things and everything, right? But then again, you need to understand कि मतलब like क्या सही है क्या गलत है and everything in between, right? First myth is that antibiotic cures viral infection. Well, ये सच नहीं होता, because antibiotic इसलिए बना होता है ताकि वो वायरस या बैक्टीरिया को किल कर सके, लाइक फ्लू कोल्ड कोविड-19 आया था वैसा, ठीक है? बट एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, वायरस आर डिफरेंटली कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो एज सच लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ तो आप एंटीबायोटिक लोगे, बिकॉज एंटीबायोटिक आर मेड फॉर again bacteria, right? Taking antibiotic when there is not needed doesn't make you recover faster. Instead ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है आपको एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट बनाने में, जहाँ पे एंटी बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाती है मेडिसिन के कंपैरिजनली, एंड फिर आपको ओवरडोज लेना पड़ता है व्हेन यू गो फॉर सम सीरियस इलनेस और एनीथिंग लाइक दैट। सो कभी भी आप अगर एंटीबायोटिक ले रहे हो तो घर का कोई भी जो पड़ा हुआ है वो मतलब mg क्वांटिटी बहुत मैटर करता है। In that regard, go to a healthcare professional, a physician, which can prescribe you a better antibiotic, to be honest. Okay, so second myth is that cracking your knuckles. Okay, so basically this is it. Okay, and a lot of people have this habit, right? Even I have this habit of cracking my knuckles. So some people think just like even my father said, why you're doing this and like that, right? So some people believe that you'll get arthritis just because you're cracking your bones, be it neck or hands or feet, anything like that, but ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? क्रैकिंग नकल्स बेसिकली जो हमारे जॉइंट फ्लूइड होते हैं वहाँ पे बबल्स बन जाते हैं एंड थोड़ा कंजेशन बनता है, तो उसकी वजह से हम क्रैक करते हैं। तो अंटिल एंड अनलेस आपको पेन नहीं आ रहा है आपके जॉइंट्स के बीच में, एवरीथिंग इज फाइन। क्रैकिंग अनोइंग होता है, बट देन इट्स फाइन, इट डजंट लाइक इट्स डिस्ट्रॉइंग योर जॉइंट और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, but yeah, overstretching or overdoing anything is harmful, right? So in control only, yeah. So third myth is that like you need 8 glass of water, 3-4 liters of water. No, so you have to listen your body. Even I advise people to drink water, but only depends upon their age, height, body size, okay, what type of meal they are taking, okay? अगर आप hydrated fruits ले रहे हो, salad ले रहे हो, तो obviously your body requires less amount of water. But अगर आप लाइक नहीं ले रहे हो, ड्राई फ्रूट मतलब ड्राई स्टफ फूड इंटेक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वाटर इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा, राइट? फॉर द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली, because very much amount of energy and the water content is there in our body. Okay, so again ये myth होता है कि आपको 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना ही है या 3 लीटर्स या 4 लीटर्स ऑफ पीना ही है। पीना इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट, बट आप अपने बॉडी को लिसन करो। वेन एवर यू आर थर्स्टी यू कैन ड्रिंक, डिपेंड्स अपॉन योर फूड, एक्टिविटी, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है वाटर इनटेक के लिए। ओके, so fourth myth is that fever is always dangerous. Well, I don't think okay, I mean like fever is the basic defense mechanism of your body. कभी भी आपको कोई भी एक प्रॉब्लम होती है, कंडीशन होती है, पेन होती है, तो आपको बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू सम अनसर्टेनिटी इन द बॉडी, राइट? सो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका
अंदर से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो योर बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया फिर उस इन्वायरमेंट में एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, राइट. So the goal isn't always to eliminate the fever immediately. However, high fever obviously दिक्कत करता है and everything like that. अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन इन्फेक्शन उसमें फीवर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम है. अदरवाइज माइल्ड फीवर इज अ फाइन थिंग, आई वुड से, राइट. Again, fifth myth is that sugar make you hyperactive. Okay, and especially in the children's I have listened this कि hyperactive हो जाते हैं बच्चे जो ज़्यादा sugar consumption करते हैं, right. Even in the people also I would say this, but not too much. Okay, sugar plays some part of role in increasing your insulin level, or maybe your understanding of the body activity and everything. But no, it's not very true कि alone sugar make you hyperactive in regards of activity or anything like that. मतलब different आपका एक flight and flight hormone भी होता है जो आपको hyper active बनाता है to any response or occasion or trip, anything like that, right. Even I'll get excited listening that I'm going on a trip, but without eating sugar. So it's not particularly on sugar, basically it's the overall lifestyle or the conditioning you are in, right. So yeah, this is the fifth myth. Now the sixth myth is very dicey and complicated, I would say. See, sixth myth जो है वो ये है कि नेचुरल हमेशा सेफ होता है. अब ये चीज मैं कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सकती हूँ, मतलब नेचुरल सेफ है, बट एज आई सेड बिफोर इन द स्टेटमेंट, ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, फिर वो कुछ भी हो, राइट, लाइफ में एनीथिंग, राइट. सो द थिंग इज कि नेचुरल अच्छा है, नो डाउट, बट नेचुरल चीजें भी, फॉर एग्जाम्पल पीपल से कि आप जिंजर वाटर लो, जीरा वाटर लो, सॉप वाटर लो, या एनीथिंग लाइक दैट, या कुकुम्बर लो, या कीनवा लो, एनीथिंग लाइक दैट, और प्रोटीन लो, राइट. बट अगर आप ज़्यादा प्रोटीन इंटेक भी करोगे तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल. सो नेचुरल इन दैट रिगार्ड ऑल्सो, not everything which is natural is safe. Some can be harmful if taken in higher dose or anything like that. So whenever you're visiting any doctor or practitioner for any consultation, mention that person that yeah, you're taking any supplement or any medicine or anything like that, right. So that वो उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सके और हेल्प कर सके, क्योंकि आप नेचुरल ले रहे हो, अननेचुरल एलोपैथिक ले रहे हो, everything needs to be filtered out and digested in your body. So think about it, and whenever you're taking anything natural, safe, anything like that, right. So just take a read about it, try to have some scientific back and knowledge about it, and then take that part in your lifestyle. Okay, so the seventh myth is that cold weather or cold water causes the cold symptoms and everything, right. So ये completely true नहीं है, partially it may be depending upon person to person, right. So it's a hard topic to debate on, but yeah, को ऐसा जरूरी नहीं होता कि ठंडा पानी पीने से आपको वो हो जा रहा है, बट द थिंग इज कि आपका बॉडी ऑलरेडी हाई है टेम्परेचर में. फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ फीवर एंड माय बॉडी टेम्परेचर इज हाई, राइट, एंड आई एम ड्रिंकिंग अ कोल्ड वाटर, दैट वोंट बी एबल टू सस्टेन माय बॉडी. फॉर एग्जांपल कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर और ये फूड आपके बॉडी में जाता है, ट्राई टू मेंटेन योर बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर, राइट. सो इन दैट रिगार्ड बोला जाता है दैट ठंडा गर्म नहीं करने को, बट देन ऐसा कुछ नहीं होता कि ठंडे मौसम में आपको सर्दी लग जाएगी या एनीथिंग लाइक दैट, ठंडा पानी पियोगे तो आप सर्दी लग जाएगी या एनीथिंग लाइक दैट. ओके, इट्स जस्ट कि आप गर्म में हो तो ठंडा ड्राइव इन मत करो अपनी बॉडी में, ठंडे में तो गर्म अचानक से ड्राइव इन मत करो. You should give the normal body temperature to your body in regards of food, drink, everything. Okay, so 8 point is that detox drinks clean your body. Well, I would say detox tea, juices आजकल काफी trending है, but yeah, it doesn't work at all. Even people drink real juice food that is real, or real coconut water is real, but I don't think that is real. I mean I can't. I mean अगर आपको खराब खाना ही है तो आप गोलगप्पे जाके खा लो, रोड साइड का है ना, so that will be much better. But yeah, saying that you're eating healthy and then you're having a artificial sweetened drink or anything like that isn't a detox water or anything. Okay, so that is my perception. Again, a lot of people who won't agree, but yeah, I'm saying what
I believe, right? It would be like you shouldn't exercise when you are sick. Well, this is true that you shouldn't exercise, but depends. If you are like, having a mild congestion or like body ache or not feeling well, sometimes we are not like, mentally up stress hote ho, that is also not a kind of a sickness only, I believe, right? So in that you can like, do some exercises so that your body gets calm and composed. So in periods also, if like women feel comfortable and anything like that, she can exercise. There is nothing wrong. In fact, like performing exercises during periods makes your like, blood flow more natural, I believe, like, for myself at least. So yeah, this is it. And 10th बस बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो है कि आप लाइक, जब तभी चेकअप करवाओगे जब आपको फील हो रहा है कि आप बीमार हो, राइट? सो दिस शुडंट बी द फैक्टर, आई एम लाइक यू शुड गेट योर सेल्फ चेक, like, every year, if you are above the age of 30, I believe. So in that regard, like, get yourself check, I mean, like, if you're a working person, आजकल कंपनी भी प्रोवाइड करती है like medical checkups and also आप करवाओ, like, routinely करवाओ, yearly करवाओ. So that will be like one of the factor. In fact, like for your parents who are like 50 plus, they should do like ईयरली. ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि आपको कोई कंडीशन है तो ही आप चेकअप करवाओगे. आप चेकअप करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज लैकिंग इन योर बॉडी, एंड देन यू विल बी एबल टू पुट इन दी मोर, राइट? एक बार आप मेडिकल चेकअप करवा सकते हो, लाइक सीबीसी हो गया फॉर वुमेन्स, आई वुड से लाइक थायराइड, D3 एंड एवरीथिंग. फॉर मेंस आल्सो आई वुड से कोलेस्ट्रॉल फॉर मेन स्पेशली, बिकॉज लाइक, हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा मेन में होते हैं. So this type of test you can do in general, right? So again, by taking a healthcare like, suggestion, or maybe you can self-prescribe also. Like nowadays, the people are much educated and understanding what medical knowledge are, right? So yeah. So these were the 10 medical myths which I wanted to share on my channel with you all. And thank you for watching my video. I'll make some new, and we'll meet again. Till then, take care, spread love, and do share with your friends and family. Let them know what is going on with every now and then, right? So, yeah, take care.